Okay, perfect. So, doctors, after completing the living world, yes, Aditi, you are audible. मैंने सुन लिया आपको, don't worry. So, after completing the living world chapter, after completing the cell biology by Dr. Bhavna Singh ma'am, by completing biomolecules by me only, by completing cell division by me only, there were so many questions and discussion that we have done in last lectures. Now we are going to start another physiology. This is plant physiology. So some questions were there. Should we prepare a separate notebook? Yes. If available, go for a separate notebook. So that plant physiology पूरा एक रजिस्टर में हो जाएगा, एनिमल फिजियोलॉजी पूरा एक रजिस्टर में हो जाएगा, सेल बायोलॉजी पूरा एक में हो जाएगा. So at the last moment of the exam, you will be very much comfortable कि किस रजिस्टर से हमें क्या पढ़ना है. सम्यक, did you understand? Yes, sir. Perfect. So everyone is all set for plant physiology? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दोस्तों जहां तक क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी इसलिए भी मैं पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए भी मैं बिकॉज आई एम कंडक्टिंग इट पैरेलल बिकॉज विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी दैट वी हैव ऑलरेडी डन 2 chapters, digestion, breathing and the circulatory system, that was conducted by Dr. Bhavna Singh. So these 3 chapters we are done with this, and parallelly we will start plant physiology, so that all those students must be comfortable, those who are appearing in KVPY examinations. So not only for KVPY, but parallel there is some other aspect is, since we have availability of the study material of plant physiology. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's why it will be very easy for both the parties to deal with the chapters. And plant physiology parallel start हो जाएगा तो थोड़ा सा easy भी रहेगा हमारे लिए. इधर कुछ zoology का पार्ट कवर होता जाएगा, इधर कुछ plant का पार्ट कवर होता जाएगा. Right? So now be ready. We are going to start plant physiology. As far as human physiology was concerned, in human physiology, दोस्तों हम लोग 5 points discuss कर रहे थे. Number 1 was the evolutionary train. Number 2 was the anatomy and structure. Number 3 was the mechanism in physiology. Number 4 was the regulation, and number 5 was the disease and disorders. Am I right? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Not exactly in the same way, because in the terms of evolution there will be no significant, or there is nothing material to be delivered as far as evolutionary aspect is concerned, because evolutionary aspect will be deal in biological classification chapter, where you will learn how it evolved right from deepest most red algae to brown algae to green alga to terrestrial plants like pteridophytes, both the amphibic plants like bryophyta, then terrestrial plant pteridophyta, then gymnosperm, and then angiosperms. So this will be a evolutionary train, and that we need to deal in a separate chapter known as biological classification. Perfect. So उस पार्ट को हम फिजियोलॉजी में डिस्कस नहीं करेंगे. Yes, एक पार्ट आएगा that is anatomy and structure. That is also not absolutely needed, not exactly needed in the plant physiology, because this is another separate chapter given in your syllabus. This is plant anatomy. फिर सवाल ये होता है कि सर बिना एनाटॉमी पढ़े हम फिजियोलॉजी कैसे पढ़ लेंगे? Yes, I do agree with this. But what I am dealing with you, while we are discussing the plant physiological chapters, I will give you a brief idea time to time, just to keep a pace with the plant physiology. Otherwise उस chapter को मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ, that is anatomy, plant anatomy. वो एक अलग chapter है when we will have the availability of modules. So evolutionary train मुझे अभी नहीं देखना है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर वाला पार्ट नहीं देखना है, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट किस पर आऊंगा? मैकेनिज्म.
यस, और मुझे पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में एक्चुअली बताऊं तो केवल मैकेनिज्म ही डिस्कस करनी है ना। आसान बात है ना, मजे की बात, क्योंकि कहीं भी मुझे इसका डिजीज तो बताना नहीं है, मुझे डिसऑर्डर तो बताना नहीं है। हाँ, उसका रेगुलेशन जरूर बताऊंगा, बट नर्वस रेगुलेशन नहीं होगा ना, वो उसके हार्मोन से रेगुलेट होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हमारा सारा फोकस प्लांट की मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी पर रहेगा। परफेक्ट। तो अब हमें कौन कौन सी फिजियोलॉजी पढ़नी है उसको भी समझते हैं। Which physiology we need to learn and how we will proceed. हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं उसको हमें देखना है। तो हम जो प्रोसीड करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर मैंने पढ़ाना है आपको प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सबसे पहले दिया गया है नंबर 1, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशन। दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है, दिस इज मिनरल न्यूट्रिशन। तीसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस। कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है इसमें भी बताऊंगा मैं। फोर्थ चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और फिफ्थ चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना है बच्चों पीजीआरस। दिस इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। If I am not wrong, only these 5 chapters are given in our syllabus. Am I right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. In NCERT. मतलब, what is that plant physiology? Why we need to learn the plant water relationship? Because मैं यदि मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं तो प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यार फोटोसिंथेसिस, जिसके लिए हम उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यदि हमें वो ऑटोट्रॉफ की मैकेनिज्म, क्योंकि ग्रीन प्लांट बोलते से बिल्कुल एक क्लियर कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए फूड बना रहा है। बट यार वो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म वो तो मैं इसमें बताऊंगा ही, बट उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसके पीछे भी तो कोई मैकेनिज्म होगी। भाई प्लांट यदि खाना बना रहा है तो डेफिनेटली द प्रोसेस दैट दे आर डूइंग लाइक फोटोसिंथेसिस, दे डू रिक्वायर water, they do require some minerals, they do require energy. So how they are producing it and from where they are getting it? So there are some more mechanisms involved behind their being autotroph in nature. So those mechanisms is also the part of plant physiology, because there are some physiological mechanics or mechanism by which plant absorbing water from the roots. By some other mechanism, plant synthesizing the food and sending it to the root. So we need to understand how plant and water is related, how xylem carrying in one direction only, whereas phloem carrying in bidirection, leaf to root, root to leaf, but xylem only root to leaf. ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी ऊपर आया and that rain water will reach to the plant leaf. No, that will first reach to the roots and then roots will supply only. That means we need to learn the basic physiology, that is how plants absorbing water to proceed the basic mechanism which is called as photosynthesis. Therefore, we need to learn plant water relationship, because those plants also surviving where the water is deficient. How they are surviving? Plants are surviving also in that atmosphere where water is only there, like aquatic plants. How they are surviving there? If they are surviving better, then how desert? And if desert is surviving better, then how is it in aquatic? So we need to understand the mechanism of stomatal opening and closing. We need to understand why stomata is there to maintain the water balance. So many things we need to learn before
Again, I'm saying, before learning the basic mechanism, that is what? Photosynthesis. Understood? Yes, sir. Yes, sir. But fine. If I'm considering that plant taking water from roots, so same time what I expect, this is not the way कि मैंने एक स्प्रे लिया जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल ये सब मैंने स्प्रे कर दिया और प्लांट की लीफ को ले दे दिया. No way. Those nutritions, those nutrient, those elements are also absorbed through roots only. So कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी कि how along with water the nutrient reaches to the leaves, because if nutrients are not reaching to the leaves, how the basic mechanism will be there. So in the first two physiology we need to learn how plant and roots are interrelated in the terms of water receiving, in the terms of nutrient receiving, and in terms of nutrient cycling. Because when leaves will fall, when they shed off by yellowing or by aging, that mineral must need to be the recycled. वो रिसाइकल होना जरूरी है ताकि वो फिर यंग लीव्स को मिलता जाएगा वही न्यूट्रिएंट. तो बहुत सारा उसमें इन्वॉल्वेशन है, वो फिजियोलॉजी हमें समझनी है. The third one is photosynthesis. Everyone knows green plants, and the fourth one is how they are surviving. Because मैंने आपसे कहा था breathing पढ़ाते समय, plants do not breathe. Yes or no? Yes, sir. So ओमकार भाई आप हैं? ओमकार is not there. Just a minute. Okay. Perfect. So मैंने कहा था आपसे in terms of in case of human breathing physiology जब हम पढ़ रहे थे, plants. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Okay, sir. Okay. I was just confirming. Oh, you are audible. Ajit, be on mute. Ajit, be on mute. Okay, perfect. Anyone can tell me why plants do not breathe? Anyone? Sir, as they do not have complicated body design like us. But Spandan, Sir, they may I also. tell? They do not have the respiratory organs like us. अरे भाई. Sir, may I tell? स्पंदन एंड कुंजल, सॉरी स्पंदन एंड प्राप्ति, आपने जो मुझे बताया कि उनके पास ऑर्गन नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैं तो ये कहूंगा कि दे आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड आपने कहा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं, तो ऑर्गन बनवा देते हैं आप. गायत्री. Sir, it is because each part of the plant will take its own air by diffusion. They don't need to breathe actually. Because each part of the plant is capable to meet their requirement by their own. अरे स्ट्रोमेटा होते हैं ना throughout the surface. स्पंदन, प्राप्ति, understood? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि उनके पास अपने पूरे थ्रू आउट द बॉडी सरफेस पर स्ट्रोमेटा है. सोचो ना आपके पास यदि सारे लंग्स यहाँ पर पोर होते तो आपके भी इस ऑर्गन की क्या जरूरत थी प्राप्ति? Am I right? Yes, sir. It's not because कि उसके पास ऑर्गन नहीं है. भाई ऑर्गन इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं. डॉक्टर भंडारी. Yes, sir. Understood. Okay. And Dr. Bhandari and all those students who yet did not reach to the center, not visit a single time to check their notes, to show their notes, please do come in the next week. Not this week, but please do come on the next week so that we will check your notes properly. Okay? Yes, sir. And if someone is called from resonance office, then they must come. If you are receiving a call,
just come and show your notes, then you have to come. Okay? To meet me personally, do come in the next week, not this week. Okay. So, coming to the point, plants do not breathe because they do not require at all, because each and every part of the plant is capable to complete or to meet their actual requirement. But know the living organisms in the nature who can't who do not respire. Each and every organ has to be respired. वो रेस्पिरेशन मैंने कई बच्चों से पूछा भी है while taking admission, जो एडमिशन लेने आए थे, कि रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल का सेम होता है क्या? Yes. Both intake oxygen, both expelled out CO2. ये रेस्पिरेशन की बेसिक प्रोसेस है, जहां O2 लेना होता है और CO2 छोड़ना होता है. ये सभी करते हैं. सभी इन द सेंस ऑल दोज हु आर एरोबिक, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो सभी यही काम करते हैं. ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना. But एक process they have extra. This is what? Photosynthesis. And this process, byproduct of this process is oxygen. So we used to say, plant gives us pranavayu. Plants gives us oxygen. Yes, but this is not due to their respiration. वो उनकी सांस छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन मिल रही है, ऐसा नहीं. सांस में तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी CO2 छोड़ रहे हैं, हम भी CO2 छोड़ रहे हैं. इसीलिए तो दोस्तों मैंने आपसे सबको कहा है कि हॉस्पिटल में भी किसी से मिलने जाओ कि गेट वेल सून, तो डोंट कैरी द फ्लावर बुके, बिकॉज आप उसे गेट वेल सून करने नहीं बोल रहे जा रहे हो, आप उसे गेट वेल सून करने जा रहे हो. क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपने जो फ्लावर का बुके ले गया है, वो रात के समय क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन तो करेगा ही, बट रात के समय वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि फोटोन ही नहीं होगा, लाइट ही नहीं होगा. जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, प्राणवायु मिलेगी नहीं, और दोनों ही, पेशेंट भी और आपका दिया गया फ्लावर का बुके, दोनों ही CO2 छोड़ रहे होंगे. सफोकेशन होने लगेगा. उस पेशेंट को जिसे आप गेट वेल सून करने गए थे, वो गेट वेल सून हो जाएगा. सो प्लीज कैरी some fruits, some medicines, rather to carry the flower bouquet. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उस पूरी प्रोसेस को हमें पढ़ना है कि कैसे ह्यूमन से और इसमें सेम होती है. इसीलिए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको रेस्पिरेशन नहीं सिखाया गया, आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज सिखाया गया, क्योंकि आपको ये डबल हो जाता फिर. Am I right? Am I right? Yes. Yes, sir. डबल भी हो जाता, और फिजियोलॉजी बहुत सारा है ना ह्यूमन में, 7 से 8 फिजियोलॉजी, इधर तो 3 से 4 ही थी, इसलिए रेस्पिरेशन को इधर दिया गया. फिर PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. जैसे ह्यूमंस के केस में एंडोक्राइन सिस्टम होता है दोस्तों, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे इसमें जैसे एनिमल हार्मोन्स होते हैं, वैसे इनके प्लांट हार्मोन्स होते हैं, नोन एज फाइटोहार्मोन्स. एंड दीज आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्रूट रैपिंग वाला इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं. Perfect. So let us start with the first chapter, that is plant-water relationship. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Heading डालिए. Plant-water relationship. और क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इसमें. नंबर 1, क्योंकि बच्चों इतना एब्रप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इतना एब्रप्ट आई शुड से, इतना रैंडम चैप्टर दिया हुआ है कि एकदम उलझ जाता है. वैसे कुछ लॉजिकल भी है, बट स्टिल मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमें चलता है ना. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी, फिर हम देखेंगे बच्चों means and modes of transportation. किन किन तरीके से प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वो तरीके हम लोग देखेंगे. मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें 2 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं.
एक मैं बताऊंगा आपको एक्टिव और एक मैं आपको बताऊंगा पैसिव। एक मैं आपको बताऊंगा एक्टिव और एक मैं आपको बताऊंगा पैसिव। लिखते चल रहे हैं मेरे साथ आप? चलिए, जब ये हो जाए, तीनों तरीके हो जाए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं डिफ्यूजन, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऑस्मोसिस, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। परफेक्ट। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक साइन डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल, लाइक साइन पी यानी प्रेशर पोटेंशियल, लाइक साइन एस यानी सॉल्यूट पोटेंशियल। साइन पी, साइन डब्ल्यू, साइन एस, केवीपीवाई का परमानेंट क्वेश्चन, आंख मूंद के चले जाओ तो ये सवाल आएगा, परमानेंट सवाल। साइन डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, साइन पी प्रेशर पोटेंशियल, साइन एस सॉल्यूट पोटेंशियल, वो डिटेल में आपको पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। मैकेनिज्म हो जाएगा ट्रांसपिरेशन की, पाथवे हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें भी दो मैकेनिज्म बताने वाला हूं, एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें भी दो बताने वाला हूं, एक साइटोप्लाज्म से जाने वाला सिम्प्लास्ट और एक वॉल टू वॉल जाने वाला एपोप्लास्ट। परफेक्ट। ओके, एनीवन ऑफ यू, गायत्री, स्पंदन, Mukteed, anyone of you have NCERT right now with you? Yes, Yes, sir. I'm sir. having. Yes, sir. Mukteed, सबसे पहले पेज पे ट्रांसपोर्टेशन करके एक वर्ड लिखा होगा, प्लीज चेक। Translocation. बोल्ड लेटर में लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन एनसीईआरटी में। Sir, first पेज पे बोल्ड में ट्रांसलोकेशन लिखा है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, नो प्रॉब्लम। सेकंड वाले में डिफ्यूजन लिखा होगा, देखो बोल्ड लेटर्स में। हाँ सर। बिकॉज आई डोंट हैव एनसीईआरटी इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर ऑस्मोसिस लिखा होगा। नहीं सर, उसके पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन मैंने दोनों टाइप के लिख दिए, सिंपल और फैसिलिटेटेड। ठीक, उसके बाद ऑस्मोसिस नहीं, उसके बाद एक्टिव ऑस्मोसिस नहीं हुआ तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। हाँ वो पहले सर। नो प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा एब्रप्ट उन्होंने दिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वाटर पोटेंशियल दिया होगा, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, Yes. सॉलिड पोटेंशियल। यस सर। परफेक्ट। उसके बाद क्या दिया है हेडिंग? ऑस्मोसिस। ठीक, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक, उसके बाद ट्रांसपिरेशन। ठीक, उसके बाद अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ many nutrients। ठीक, बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको यहां पर शॉर्ट डिस्टेंस और यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस, नेगेटिव, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, ई के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, आप उसके नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया गया यहां पर
अपटेक ऑफ वाटर, फिर आपको दिया गया है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, फिर आपको दिया गया है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मुक्ति, अपटेक ऑफ वाटर का अपटेक ऑफ मिनरल आयंस भी दिया गया है, हाँ सर। फिर फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन कॉम्प्रोमाइज भी दिया गया है। सर एक मिनट। Yes, sir. हाँ सर दिया है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। उसके बाद मास फ्लो हाइपोथेसिस दिया गया है। यस उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है? सर, This one. हो गया सर। ठीक, done. फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट है, क्या बोले? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। हाँ, दिस इज मास फ्लो हाइपोथेसिस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वो तो हो जाएगा। अपटेक ऑफ वाटर, फिर अपटेक ऑफ मिनरल आयन, और ये है अपटेक ऑफ फूड। अपटेक तो नहीं कहूंगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे कि मास फ्लो हाइपोथेसिस मुझे आपको बताना। ठीक है, बीच में कुछ छूटा हुआ तो मैं देख लूंगा, कवर करा दूंगा आपको, डोंट वरी। और लास्ट में मैं बता दूं, दिस इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन a compromise. ये टॉपिक पढ़ने, तो मैं आज आपको टॉपिक ए और टॉपिक बी कवर कर रहा हूं। प्लीज नोट, आई एम शेयरिंग द इमेज एंड विल स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर, हाँ बोलो। sir, I wanted to ask what is the difference between the B and E point? बी एंड ई? Yes, अरे बी में D, तरीके D. हैं, किन तरीकों से जाता है वो बी है, किस रास्ते से जाता है वो ई है, किस वजह से जाता है वो डी है, और कौन कौन ले जाता है वो सी है। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। यही तो एनसीईआरटी ने क्या किया, थोड़ा सा इसी को जंबल कर दिया। मैं सिस्टमैटिकली चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेट अस स्टार्ट विद Yes, sir. टर्मिनोलॉजी। नोटेड बच्चों, मिटा दूं? हाँ सर। Yes, sir. राजा नोटेड? Yes, sir. Noted, sir. चलिए, सबसे पहली हेडिंग थी आपकी टर्मिनोलॉजी, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. टर्मिनोलॉजी में पहला टर्म हम लिख रहे हैं, टर्म नंबर 1, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 2, ट्रांसलोकेशन। नंबर 3, सर्कुलेशन। नंबर 4, active transportation, and number 5, passive transportation. Please write, एक एक लाइन छोड़ेगा क्योंकि आपको डेफिनेशन लिखना है।
मैं सिर्फ बताऊंगा। चलिए, नोटेड। Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है बच्चों, either water or solute or both। जब केवल वाटर या केवल सॉल्यूट या दोनों ही किसी भी तरीके से जाते हैं तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, from one place to another. This is simply transportation. But what translocation is? Always solution. That means what? Solvent plus solute, again transport from one place to another place. Anjali, Ankur, Arjun, Arnita, understood? Yes, sir. परफेक्ट। बट सर्कुलेशन के केस में ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन के केस में सर्कुलेशन कहते हैं, प्लांट के केस में ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं? बिकॉज वी नो दैट इन सर्कुलेशन द प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन एंड द प्लेस ऑफ एंडिंग विल रिमेन सेम। लाइक इन हार्ट, ब्लड स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, moves through the organs and coming back to the heart. Since it receives back what it what is sent, therefore circulation is place of origin and place of termination is same. But can you think the water that moves from the root coming back to the root, is it? No, sir. No. Therefore, it is one way. It is one way. Okay. Active transportation. So, if we know that transportation, since translocation is carrying solute plus solvent, सिंपल सी बात है भाई, यदि आपके और प्लांट की हाइट का कंपैरिजन किया जाए तो which organism has more height, plant or animal? Plant. Plant. You can complete your water requirement by drinking a glass of water, but can you think how a tall tree or a bamboo plant will compensate the water loss? क्योंकि पानी तो पी नहीं सकता, तो वो कंपनसेट कैसे करेगा? तो डेफिनेटली वाटर का कंटीन्यूअस कॉलम एक बना होना चाहिए। तो वाटर का कंटीन्यूअस कॉलम जाइलम में बना, उसलिए उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बट वो इतना लंबा जाना है, इतना दूर जाना है, तो वो विचार करेगा मैं अकेला क्यों जाऊं? I should carry some solute also. If I am carrying some solute, मुझे इतना लंबा जाके पानी छोड़ के आओ, फिर इतना लंबा आयंस या मिनरल छोड़ के आओ, फिर वापस आओ, पानी, फिर मिनरल, फिर पानी, फिर मिनरल्स। It's nonsense. So better कि वो सॉल्यूशन मोड में चला जाए। इसलिए मैंने कहा वो ट्रांसलोकेट करता है बजाय ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अकेला पानी कहना है ट्रांसपोर्टेशन, नो प्रॉब्लम। वाटर विल बी ट्रांसपोर्ट, वाटर विल नॉट ट्रांसलोकेट। If it is translocation, that means solute must be there. Understood? Ankur? Yes, sir. Yes, sir. So, बोलिए, कोई doubt? so I just want to confirm that in plants there is translocation, means one way, and in humans there is circulations, mean two way. Yes. Okay, sir. Nee, just want to confirm. But Dr. Bhandari, you must know, if I'm talking about translocation, so it is not only of water, na? It is it is also of nutrient, it is also of food. Yes or no? Yes, absolutely. So if food is moving, it is bidirectional. It is bidirectional. क्योंकि ये लीफ से रूट को भी जाता है और इमरजेंसी कंडीशंस में न्यू लीफ बड को रूट से भी आता है। So phloem movement is bidirectional, whereas xylem movement is unidirectional. Dr. Bhandari. Yes, sir.
Perfect. So, if we are talking about the transportation or translocation, whatever it is, there must be two mechanisms. One is active transport, one is passive transport, which is by default, without any exception. Always it does mean what? Active transportation, the Needs energy. transportation. Require energy from ATP. कोई बोला कुछ? Sir, it will require energy from ATP. Perfect. That consumes ATP, or I should say energy, because it is always against the concentration gradient. Against the concentration gradient. And passive transportation. No consumption of energy. No consumption of energy. No consumption of energy. Perfect? Please note, because it is always towards the concentration gradient. Understood? It is always towards the concentration gradient. Understood, doctors? Please note, and if you find any difficulty, then tell me. Noted? Yes, sir. Check. Yes, sir. अब दूसरा मैंने आपको बताना है बच्चों, मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिंपल ट्रांसपोर्टेशन के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा. ट्रांसपोर्टेशन, एक मैं बताऊंगा आपको एक्टिव और एक मैं आपको बताऊंगा पैसिव, जो मैं यहां लिख चुका हूं. एक्टिव में एटीपी कंजप्शन, एक्टिव में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. आप नीचे टेबल बनाइएगा ऐसा, against the concentration gradient. Whereas passive, there are three modes of transportation: simple diffusion, facilitate diffusion, and osmosis. Please read NCERT. मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं. Please read NCERT.
Noted, doctors? Yes, sir. अब एक बहुत बिल्कुल पेन डाउन कर दो, पेन डाउन कर दो और बिल्कुल शांति से जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनो। बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम। हो ना, थोड़ा सा एकदम हो तो है। सॉरी बच्चों। ओके, मैं ये कह रहा था, मैंने आपसे कहा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताना है। एक बताना है बच्चों एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना है। कोई भी मटेरियल बच्चों यदि टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा होता तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सीधे यहां रख दो, वो टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाए। बट जस्ट प्लान कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो यू नीड अ पुशिंग फोर्स, यस और नो? Yes, sir. And same time either pushing force or something like pulling force is required, yes or no? Yes, Yes. sir. That means against the concentration gradient there does a requirement of ATP, yes or no? Yes, sir. So what I'm telling you Gargi, मैं आपको पैसिव पढ़ा रहा हूँ, एटीपी का तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि सिंपल, उसका कोई बहुत लॉजिक नहीं। उसका लॉजिक बस इतना है कि एनर्जी लगनी है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है और डेफिनेटली किसी की मदद से जाना है, वेदर इट इज पुशर और वेदर इट इज पुलर। गार्गी, अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट। तो अब मैंने आज आपको बताना है वो पैसिव डिफ्यूजन। बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। सिंपल डिफ्यूजन फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में केवल और केवल एक मैकेनिज्म होती है दोस्तों, और वो है सिंपल डिफ्यूजन। आई शुड से डिफ्यूजन, केवल एक मैकेनिज्म। ये भी डिफ्यूजन है, ये भी डिफ्यूजन ही है। लेट मी वेरी क्लियर, बीइंग अ प्राउड रेजोनाइट्स यू मस्ट नो कि पैसिव में केवल और केवल होता है डिफ्यूजन, बट उसको भी फाइन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? if there is no role of any type of mediator and the material is moving towards the concentration gradient without any help, then it is simple diffusion. But if moving towards the concentration gradient, which is expected, if it is moving towards the concentration gradient, let me very clear, I am telling you it is from higher to lower concentration, it is towards the concentration gradient, no need of energy. So the simple question comes into mind, then why the mediator is required? Why there any facilitation is required? Sometimes what happens, दोस्तों, कि if X element is moving towards the concentration gradient, no problem. But Y, membrane is not permeable. So with the help of mediator, that Y also move towards concentration gradient. So at that moment, at that time, some mediators are required. Like what I'm telling you, we are in a classroom. Patak sir is teaching biology, plant physiology, and there are 40 students in a room. 20 students, 30 students are girls, and 10 students are boys. Boys wants to move out of the class after finishing my class, but the corridor is not allowing male candidates to come out.
and guard is saying first females will come, and he's showing the path. Yes, come by this way. So that guard who's facilitating, who's directing to whom come and out or whom exit out, or which molecule will move out and which will not, since it is regulated by that mediator, though it is towards concentration gradient. Classroom में 30, corridor में एक भी नहीं, so simple towards the concentration gradient, higher to lower, but with the help of a mediator. If this type of diffusion taking place, then this type of diffusion is what? Facilitate. Facilitated diffusion. Diffusion. Agree? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Omkar, why you are late? Omkar. Sir, actually it was raining heavily, so I could not join. There was no electricity. I joined at 4:15, sir. Osmosis. Osmosis is again a mode of diffusion only. But in diffusion, technically, only solute can move. In diffusion, technically, only solute can move. But in osmosis, only solvent can move. Same movement towards the gradient, whatever the mode, whether it is simple, whether it is facilitated, whether it is osmosis, in which simple diffusion, solute can move without any help. In osmosis, solvent will move without any help, but in facilitated diffusion, solute will move with the help. Gayatri, understood? Yes, sir. Simple diffusion, solute will move. Facilitated diffusion, solvent will move. Osmosis, sorry. Solute will move. In osmosis, solvent will move. But, Spandan, what is the difference between these two? Facilitated diffusion will need a mediator. With the help of CP, that is known as carrier protein. Please write CP, carrier protein. So carrier protein will carry them from membrane to outside or from outside to inside. Then the mediator is needed. This is what facilitated. But if no mediator is required, क्योंकि तीनों जो तरीके हैं पैसिव के जो तीनों तरीके हैं हायर टू लोअर ही है ना, higher to lower, but with the help of mediator, facilitate. Without any help, solute, simple diffusion. Without any help, solvent, osmosis. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. चलिए प्लीज नोट, फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं. प्लीज नोट. Notate, doctors. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Should I erase this? Yes, Sir, sir. CP means protein, isn't Pardon, फिर से बोलो. sir? CP any protein, na? Carrier protein. CP is carrier protein. Yes, sir. got it.
मैंने आपको कहा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पढ़ाना है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखानी है। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन, दिस इज facilitate diffusion, and this is osmosis. Simple diffusion, मेरे साथ लिखेंगे definition, movement of solute particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration is known as simple diffusion. Noted? Yes, sir. Facilitate diffusion. Movement of solute particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a carrier protein is known as facilitate diffusion. Osmosis. बोलिए क्या लिखूं? Movement of solvent particles from high concentration to low concentration. From the region of higher concentration to lower concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, or from the higher water potential, higher water potential to lower water potential, or from the lower concentration to higher concentration is known as osmosis. सवाल पूछने वाला हूं, so be ready. Noted? स्पंदन बोलिए. Sir, means the osmosis is defined in two terms, in terms of water potential and in terms of concentration. Perfect, perfect, absolutely perfect. When it is in terms of water potential, then it will be high to low. But if it is in terms of concentration, then it is Low to high.
low to high. अब वो कैसे अभी समझा. वो ठीक ऐसे कि मैंने एक पानी के भरे हुए ग्लास में, in a glass of water, I simply dipped a resin. एक रेजिन मैंने इसमें डाली. What will happen with this resin? Sir, it will flow. Swell up. It will what? Swell up. It will swell. Become Why? turgid. There are two reasons. Number one, what I expect कि during this swelling up, water is moving from higher water potential to lower water potential. इस पानी के ग्लास में से पानी अपने हायर टू लोअर चला गया. हायर टू लोअर कौन चला गया? वाटर. यस और नो? स्पंदन. Yes, sir. But at the same time, one can say in a different way. One can say, yes, water is moving. I don't have an issue. Only water is moving. But concentration के terms में मैं कहूँ तो water is glass of water में there is no concentration at all. Resin में तो vitamins, minerals, fructose, sugar and what not. Highly concentrated. उससे तो wine बन जाती. इतना concentrated है उसमें. पानी में तो नीरा पानी है. There is no solute at all. So in terms of concentration, one can say in another way, from lower concentration to higher concentration. In both the cases, water is moving, and water has to move because हम osmosis पढ़ रहे हैं, जिसमें केवल solvent move कर, solute नहीं, केवल solvent move करता है. तो yes, I agree ना. But in both the cases, water is moving. But in case of water potential, इसका water potential ज़्यादा है. किशमिश में तो क्या ही पानी है. स्क्वीज करोगे तो एक आध ड्रॉप निकल जाए तो निकल जाए. अदरवाइज मॉइस्चर ही मॉइस्चर है, बस पानी बहुत ज्यादा नहीं. और ग्लास में पूरा पानी ही पानी है. तो ग्लास का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू रेजिन. सो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. बट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन वाटर तो डाइल्यूटेड पड़ा हुआ है और किशमिश यानी रेजिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. सो इसलिए जब भी कोई आप जैसे प्राउड रेजोनाइट से सवाल पूछे व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो शूट अनदर क्वेश्चन, सर और मैडम इन विच रिस्पेक्ट यू आर आस्किंग. इफ यू आर आस्किंग, आपने जैसे क्वेश्चन शूट किया सामने वाला समझ जाएगा इसे कंसेप्ट पता है, ये कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, कहीं से पढ़कर आया है, वो रेजोनाइट है क्योंकि वो जानता है कि इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पूछा जाए तो उल्टा हो जाएगा, लो टू हाई, और इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल पूछा जाए तो वो हाई टू लो हो जाएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. अर्जुन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, इशिता, इशिता बेटा समझे? Sir, yes. ओमकार, चलिए. सो ये मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस के केस में कंफ्यूज करने के लिए क्या देते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो क्या ये एक्टिव हो जाएगा क्या? नो, नो. लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट नहीं जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है. इसलिए सॉल्वेंट के केस में तो ऐसे ही. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. बहुत बढ़िया. अब बस क्लास बंद कर रहा हूं, उसके पहले मुझे एक बता दो, ये कब तक होता रहेगा? ये कब रुकेगा? सिंपल डिवीजन कभी रुकेगा? Equilibrium. इक्विलिब्रियम. ये कहां पर आकर रुकेगा? इक्विलिब्रियम. नो टायर्डनेस या नो सैचुरेशन. भाई थकेगा ही नहीं ना, थकने की तो कोई बात ही नहीं है ना. लेकिन इसके केस में क्या आएगा? तो ये भी इक्विलिब्रियम पर, लेकिन इसमें सैचुरेशन आएगा. ये अगली क्लास में बताऊंगा. सैचुरेशन आएगा. क्यों आएगा? भाई मेरे थ्रू जा रहे हो, मैं इधर से उधर कर रहा हूं, तो मैं कभी ना कभी तो थकूंगा ना. 2 लड़कों को ले जाऊंगा, 4 लड़कों को, 6 लड़कों को, 10 लड़कों को, मैं भी तो थकूंगा. यहां तो कोई कैरियर प्रोटीन है ही नहीं ना, और ऑस्मोसिस में नहीं है, तो यहां भी थकने वाली कोई बात नहीं. तो नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन. वो तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता. अंडरस्टूड? Yes, sir. So for today, going to close the session. I hope you understand it very well. Doctors,
Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 In the very next class, be stay tuned with NCERT reading. Next इसमें सवाल जवाब करूंगा. All the best. Excuse me, हाँ बोलो प्रथमेश. sir. Can you please send a pic of board? It's not clear to me. प्रथमेश हमेशा भेजता हूँ बेटा मैं. चल. All the best.